अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं स्प्रिंग फ्राइड चिकन। बहुत ही आसान रेसिपी है और फटाफट तैयार हो जाती है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपसे आप अपडेटेड रहें। पहले हमें चाहिए एक ब्रेस्ट पीस। 450 ग्राम्स का चिकन है। ब्रेस्ट पीस खुश्क होता है, इसके अंदर लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं, उसको तोड़ने के लिए अब इसकी लंबी लंबी स्ट्रिप्स काट लेनी है। ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली। तीन टेबलस्पून सोया सॉस, 3 टेबलस्पून हॉट सॉस, 2 टेबलस्पून सिरका, 1 टीस्पून सॉल्ट, 3/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर, हाफ टीस्पून शुगर, हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। वन 1/4 टीस्पून पेपरिका पाउडर, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है। हाफ टीस्पून रेड चिली पाउडर, आधे से पौने घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए फ्रिज में रखते हैं। ये मैरिनेट हो चुका है, ठंडा है इस वक्त। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1 अंडा, 2 टेबलस्पून केचप। आप चाहें तो ये एक स्टेप में भी कर सकते हैं, सारा एक साथ लगाकर रख लें। अगर आपने फ्रीज करना है तो सब एक साथ लगाकर रख लें। अगर आपके पास टाइम है और आप इसको वेट करवा सकते हैं तो बेहतर है कि पहले नमक और मसाले चिकन के अंदर रच जाएं और फिर उसके ऊपर मैदे की और कॉर्नफ्लावर की कोटिंग आ जाएगी। मसीद 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें और इधर कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दें। चिकन मैरिनेट हो गया। स्प्रिंग रोल्स की शेप में
स्टिक्स के साथ लगा देंगे। ट्रे लें स्ट्रेट 5 टेबलस्पून मैदा और 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लेना। इक्वल अमाउंट में बिल्कुल जितना मैदा ले रहे हैं उतना ही कॉर्नफ्लावर लें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें।